We want to make sure that the DNA repair pathway machinery is not working at its normal pace. And these are the two enzymes, poly-ADP ribose polymerase, which are basically involved in DNA damage repair. So if we inhibit this enzyme, it makes sure that the single strand break it remains unrepaired and progresses to double strand breaks. Eventually, cell death can happen. Now the question for the bachelor student is, if the mechanism is so streamlined, what is the need for us to work in this direction? What is the need for us to work in this direction? Because the mechanism is almost clear. The reason is, even if there is a double strand break, still sometimes the PARP inhibitors fail because they only work in cancers which are deficient in BRCA. BRCA is a breast cancer gene, and if the breast cancer gene is working at its normal pace, if the breast cancer gene is working in is having a normal function, it makes sure that the double strand breaks again gets repaired and the cell survives. We don't want this to happen. What we want is we want the cell death to happen. Now, how to do that? This can be done by making sure that the BRCA function is not working normally. The BRCA function is not active in cancer cells. Now, this is the issue. PARP inhibitors can be very, very effective anti-cancer drugs provided the BRCA function is impaired. If the BRCA function is not impaired, even if there is a double strand break, the cell will survive. So this was the starting point why we wanted to work on PARP inhibitors. So this was an issue. The issue was that there is narrow activity spectrum. It might be active in some cancers only if in those cells the BRCA function is impaired. If the BRCA function is not impaired, despite of the fact that PARP inhibitors they are working to the best of their potential, the cell will survive. And we all want the cancer cell to die. So we thought this is an issue with this class of inhibitors, and we wanted to outwit this limitation. So what we thought is, let us synthesize a dual inhibitor. Now let me just simplify the story of the dual inhibitors for you. Dual inhibitor is basically a single scaffold, single compound that can interact with two proteins or two enzymes in the body. And exhibit a synergistic anti-proliferative activity. Now, in our case, we were not aiming at synergistic efficacy. What we were aiming at was to make sure that the limitation of PARP inhibitors is outwitted. This is what we were aiming at. So we just landed on this enzyme, histone deacetylase. Now, this enzyme is a part of epigenetic machinery. When you will study cancer, we will study genetics, we will study epigenetics. And when you talk about HDACs, they are a part of epigenetic machinery which are responsible for normal functioning of the biological system. Now, many HDAC inhibitors have been approved by US FDA for their anti-cancer. But we were not interested in the anti-cancer efficacy of HDACs. What we were interested in, that if we can inhibit this enzyme, then the BRCA function can be impaired. Because there are many literature precedents that says if this enzyme, if different isoforms of this enzyme can be inhibited, the BRCA function is usually impaired. So we found that if we can synthesize a small molecule that can target PARP, that can target HDAC, then we can have a dual inhibitory scaffold that will make sure that PARP inhibitors can exert anti-tumor efficacy in every kind of cancer. We don't have to worry about the BRCA impairment. So this was the idea. So we thought that let us synthesize a small molecule that can inhibit PARP, HDAC, and can exhibit activity in many cancers. Now for the students and for the others, I would like to apprise them that right now, if you track down the progress of cancer therapy, right now the cancer therapy is usually relying on combination of drugs. We call it cocktail of drugs. We use a drug A and drug B. Two drugs will simultaneously target two different enzymes or proteins in the body,
And if we can do that, either the limitations of one of the drugs can be outwitted, or we can attain amplified anti-tumor efficacy. But there is an issue with combination therapy. Drug A, drug B. Two targets, two drugs. When you are dealing with two drugs, you have to invest a lot more effort. You have to study the pharmacokinetics of drug A. You have to study the pharmacokinetics of drug B. You have to do bioavailability studies. You have to do the compatibility studies. You have to fix the dosage regimen. What concentration of drug A is required? What concentration of drug B is required? Overall, it raises the expenses of a drug discovery campaign. Of course, when you have to do the investigations for two drugs, the expenses are going to be raised. On the contrary, when you are dealing with a single scaffold that can produce the same therapeutic outcome that a combination therapy can do, in that case, we only need to deal with one drug because that drug can approach two targets. We need to invest less time, do a lot less investigations, and less money is required. And that is the reason why everyone is working on dual inhibitors right now. So this was the foundation for this study. This was the foundation for this study. So this was the foundation of this study to simultaneously inhibit HDAC and BATA and PARP inhibition. Now, having a sound hypothesis is good. I'm sure. Am I audible to everyone? So that was the hypothesis of this project, that we want to create a small molecule inhibitor that can inhibit PARP, that can inhibit HDAC, and can outwit the limitations of existing small molecule PARP inhibitors. Now, how to create a small molecule inhibitor that can approach two targets? How to fabricate a dual inhibitor? There are many ways. The chemist basically works to the best of its proficiency to make sure that a dual inhibitor is created in the most efficient way. What we did is we leveraged the three-component model for HDAC inhibition. As you can see, there is a three-component model well established to design HDAC inhibitors, which is comprises of cap, linker, and zinc ion binding region. So basically, if you can append three chemical motifs in a very logical way, you can construct the HDAC inhibitor. But our aim was not to construct the HDAC inhibitor. Our aim was to construct a dual HDAC and PARP inhibitor. So we thought we will just place a PARP binding motif over here. You replace this cap construct with a PARP binding motif. Eventually, we'll have a target structural assemblage which contains a pharmacophore for PARP inhibition, which contains a pharmacophore for HDAC inhibition. So this was the basic idea how to design a dual PARP HDAC inhibitor. And in my lab, we have been working for the last 10 years on HDAC inhibitors. So we are very proficient in the design and development of small molecule HDAC inhibitors of various isoforms. So we were very clear about the idea how to design the molecules. But as a medicinal chemist, I'm always looking to establish the structure-activity relationship. So I was not very happy with just one molecule. So we thought we'll just exercise some variation in this part. We'll exercise variation in this part so that we can establish a library of compounds. If you have a library of compounds in hand, you can establish the correlation of cellular activity, the correlation of enzymatic activity with the structural features. This was the basic idea. So what we did is we exercised the variation in linker component. Just see we changed the methylene length, and we also changed the zinc binding dose. And of course, before moving ahead, what we did is this was a fragment that was finalized to be recruited in this component as a cap component. So what we did is we placed it within the active site of HDACs and PARP just to see whether it is well accommodated within the active site of both the proteins or enzymes, and whether it is able to interact with the amino acid residues of these targets. So when we were very sure that this design model can work and can outwit the limitations of PARP inhibitors, we moved further. Now this was the synthesis. Now for all the students, I would like to tell that we can design as many compounds on papers. We can use the computer simulations, but eventually you have to move beyond that.
You have to perform the organic chemistry reactions to synthesize the desired molecule. So if you are into any branch of pharmacy, you have to be well versed in organic chemistry, whether it's nucleophilic substitutions, organometallics, electrophilic substitutions, amidations, esterifications, de-esterification. You have to be versed with the chemistry of all the heterocyclic compounds. So what we did is, whatever compounds we designed, we accomplished those compounds through 6 different synthetic routes. We established multi-step synthetic routes for 6 different synthetic routes for the accomplishments of all the compounds. Now, I'm not discussing the chemical reactions over here, but if some student is interested in knowing the chemistry of those compounds, then you're welcome. We can discuss it after this talk. These are the other schemes that were used for the synthesis of all the compounds. And once we were done with the compounds, with the synthesis of the compounds, we moved towards the in vitro cytotoxicity. In vitro cytotoxicity against 3 cancer cell lines. One was the lung cancer cell line, the other one was the prostate cancer cell line, and the third one was leukemia cells. To my surprise, this compound, one of the compound, boxed in red, it was selectively active against the leukemia cells. Just see, it was selectively active against leukemia cells. Now, if you ask me the reason why it is active against a blood-borne cancer, not a solid tumor, I don't have an answer right now, because the biologists of our group, they're working at the molecular level to pinpoint what exactly is the reason why this compound was more selective towards the leukemia cell, not a solid tumor. Now, lung cancer is a solid tumor. Prostate cancer is a solid tumor, but HL60 cell lines, they represent the leukemia cells. So we are working on that, but yes, to validate this finding, what we did is we evaluated the effect of this compound against 3 more cell lines, HH, K562 and MOLD4, all 3 leukemia cells, and did a relative comparison with oral cancer cell lines, cervix cancer cell lines and breast cancer cell lines. Again, this compound was only active against the leukemia cells. This compound was only selectively active against the leukemia cells. Now, this is a very promising finding. A compound that is active against solid tumors, not active against solid tumors, but is active against leukemia cells. Usually, we see that most of the compounds, they are more cytotoxic towards the tumor cells, solid tumor cells. So this is a finding that needs to be investigated, exhaustively investigated, I would say. But we were very confident that this compound is a very, very strong anti-leukemic compound. Then we moved towards the mechanism because we designed a dual HDAC PARP inhibitor. I'll not consume much of the time discussing the outcomes of the assays that we performed, but I'll just brief up. The compound was found to be a selective HDAC1, HDAC2, and HDAC3 inhibitor. Now, HDAC1, HDAC2, HDAC3, histone deacetylases 1, 2, 3, they are different isoforms of the enzyme histone deacetylase. So the compound will inhibit these 3 enzymes at very low IC50 values. We were very sure that HDAC inhibition is one of the mechanisms behind the anti-cancer effects of this drug. We validated it through some Western blot experiments. The compound downregulated the expression levels of these HDACs. The compound also upregulated the expression level of this one biomarker of HDAC inhibition. So through enzymatic assay, through Western blot assay analysis, we confirmed that the compound is a very potent class 1 HDAC inhibitor. We leverage the computational studies. The very basic computational studies, docking studies, dock the compound within the active site of the HDAC 1 isoform, 2 isoform, and 3 isoform. We found that the compound is interacting very well with the amino acid sequences of all the 3 isoforms. Zinc ion chelation was there, hydrophobic interactions were there, hydrogen bond interactions. So when we were very, very sure that the compound is a HDAC inhibitor, we wanted to investigate the potential of the most potent compound for PARP inhibition, because the primary mechanism that we wanted to have is PARP inhibition. Again, we evaluated the compound against PARP1 and PARP2. Surprisingly, this is totally unprecedented. Our compound was inhibiting PARP1 at picomolar concentration.
at picomolar concentration, 22 picomolar. This is 0.02 nanomolar, but 22 picomolar, that is totally unprecedented. Even the existing PARP inhibitor, valiparib, which is in clinical trial, I think it is in phase 3 clinical trial for BRCA mutated cancers. It is way less active than our compound. So this is a huge finding, and we are trying our best to capitalize on this finding, on this inhibitory potential, and we are doing more assays before we claim this. We did the Western blot analysis. The compound down-regulated the expression levels of PARP1, PARP2, H2X upregulated the expression level of gamma H2X. That means there was a single strand break in DNA. Down-regulating the expression level of PAR, poly-ADP ribose. That means there was a DNA double strand break also. Again, we performed the docking study, well placed within the binding cavity of PARP1, PARP2. We were very sure that this is a dual inhibitor. Very sure that this is a dual inhibitor which is acting through PARP inhibition, through HDAC inhibition, and is able to outwit the limitations, shortcomings, or constraints associated with the small molecule PARP inhibitor. Let us move ahead. Then we went towards the routine assays when we have to establish a anti-cancer profile of a small molecule inhibitor. We did the flow cytometric evaluation analysis. We found that the compound can cause the cell cycle arrest at G2M phase, which indicates apoptosis. Did the Western blot analysis to make sure that the apoptosis is happening. Then we did the DAPI staining. DAPI staining. The results of this assay indicated that there is a formation of number of apoptotic bodies. Indicated that, confirmed rather, that it is an apoptosis inducer. Simultaneously, we evaluated autophagy. Now, autophagy is a very contradictory mechanism. If you talk about the autophagy induction of a cancer compound, because autophagy in the early phase of cancer is good. It helps to kill the cancer cells. But in the later phases, if autophagy is happening, that means it is promoting the cancer. So it's a very contradictory kind of mechanism, but we evaluated it through acridine orange staining and found that there is an increase in number of red stem cells, indicating that the compound is an autophagy inducer. The compound is an autophagy inducer, the compound is an apoptosis inducer. Move further, develop the pH responsive nanocarrier for this. Why we developed this? Because as you know, even like I'm working on PARP inhibitors, that comes under the category of targeted therapy. Targeted therapy in broad sense means selectively targeting the cancer cells. Now, even if we are working on small molecule inhibitors that comes under the category of targeted therapy, it is very difficult to expect 100% selectivity towards the cancer cells. So it will always be cytotoxic towards normal cells also. Maybe 80% selective towards cancer cells, but there will be some cytotoxicity towards the normal cells. So to attenuate that, we developed a pH responsive nanocarrier. Basically, the idea was we'll use a nanocarrier, we'll load the drug in that, and that nanocarrier will release the drug at the cancer site, at the tumor site. Why? How it can selectively release the compound at the tumor site? Because there is a difference in pH values of a tumor microenvironment and a normal microenvironment. Tumor microenvironment is slightly acidic. So this was the idea. We prepared a polymer, loaded the compound, did the characterization. The compound was, the nanoparticles were found to be spherical. Check the pH release. Just see, at pH 6.2, this was the in vitro drug release pattern. At pH 6.2, there was a way higher release of drug from the nanocarrier compared to pH 7.4, where the compound did not release, where the nanocarrier did not release the compound significantly. And then we checked that the nano formulation of the drug was active against the cancer cells, but against the normal cells, it was way less active. So this is a very brief overview of what we did. What we did is, I'll sum up, we synthesized a small molecule inhibitor. We synthesized it so that it can address two targets, that is PARP and HDAC. We were successful. The compound showed good leukemia, anti-leukemic effects, and then we designed a nano formulation for the compound.
Eventually, we are working on this compound. I do have more data, complete preclinical data for this compound, but because of institutional constraints, I can only show this. I'm not showing the in vivo pharmacodynamics. I'm not showing the in vivo toxicity. I'm not showing the in vivo pharmacokinetics because my university doesn't allow. Because they are very hopeful that this drug, once the preclinical study is completed, then it can move to higher stage clinical investigation. Yeah, I'm working hand in glove with these eminent scientists. This is the biologist. He's the biologist of our group, Dr. Pan, a very seasoned biologist. Professor Leo, he was my postdoc supervisor. Now he's the dean of the university. So I have learned the art of drug design from my PhD supervisor, Dr. Yugantar and Dr. Professor Leo. This guy is a formulation guy. He was working in Korea, now joined our university as an assistant professor. He is very proficient in nano formulation design. Dr. Ajmer, I think he was here, now he's not here. He's the computational, he helped us over there for the computational science. And Amandeep Thakur, he was my PhD student, now a postdoctoral fellow in my lab. He was the one who did this work. The idea was ours, he was the bench worker. Yeah, I would like to show the students, this is how my lab looks like. This is the setup we have. Our lab, it matches the standards of an industrial lab. We are following the few mood culture. So all my students, they work in a few mood, a single few mood. From here to here, this is a single few mood. Two students work in a single few mood and the few mood is equipped with all the facilities necessary for the chemistry research. You can just have a look. Yeah, this is another postdoctoral fellow working in my lab from Odisha. He's from Odisha. This guy, he's from Central University of Bhatinda. He did masters from Central University of Punjab, Bhatinda, and then joined my group as a PhD student. Now he's a postdoctoral fellow. She's my Taiwanese student. This is me with the students. So in my lab, there is a protocol. I go early at around 7:45 a.m. in the lab. In the morning, I'm in the lab, and I interact with each student for around 15 minutes. Whatever issues, whatever hurdles they are facing, we discuss and we try to solve those hurdles. So, and this is like there is a glass window on a few notes. So I write the reactions, tell them the mechanisms. If they are having some issues, I tell them how to change the path, the chemical path. So yeah, this is my team. This is Dr. Ram Sharma. He did his masters again from Central University of Punjab. Joined my group as a PhD student. Now he's a postdoctoral fellow working with me. I'll also tell you that he was my student in GNU also. Back in 2011, when I joined Guru Nanak Dev University as an assistant professor, Ram Sharma, he joined there as a bachelor student. So he completed his bachelor's from Guru Nanak Dev University and then headed to Central University of Punjab for master's studies in medicinal chemistry. And then by the time I got a position in Taiwan, I was appointed as a faculty member over there. Then he joined my research. This guy is from YANTRA. I think he's from Guru Nanak College, the previous college. Yes, Sashwat Sharma. So yeah, so this guy he's from Nigeria, did masters with me, now headed to US for PhD. He got a very good scholarship and because he was always inclined towards going to US because his wife was over there. Again, my Taiwanese student. So we are just trying our best to do all the multi-step synthetic routes, try to develop new drugs that are very efficient, very proficient, very selective towards the cancer cells. Yeah, another thing I want to tell you that I have planted a small Indian diaspora in my lab. Right now in my lab, the total number is around 20 to 25 and the Indian students, they are more in number. They are around 15, comprising of, if we include all, the postdocs, the masters and the PhD students. So we have outnumbered the Taiwanese in that context and nobody is complaining because the Indian students, they have built a reputation of being extremely intellectual and very hardworking, and they have been exercising discipline to the hilt. So everyone is happy with the performance of Indian students. And if any of the students from your institute, if the principal of your college recommends me a student, then I'll have them to join my research group for master's studies or for doctoral studies. So this is it. This was a small story behind the recent drug discovery campaign that we did and
what kind of facilities we have in our lab. For this, I'll just like to say thanks to Dr. Ashwini for giving me this opportunity where I am able to interact with so many students. I was always a fan of his research proficiency, but now I'm a fan of his administrative skills also. Special mention to my seniors, Dr. Abhishek Budi Raja, Dr. Gautam. You know, they motivated me like anything when I was in the formative years of my research career. And it was very, like, I was spurred because of their motivation and I chose this path. My friend, Samir Sabra, a very proficient, seasoned natural product chemist, he has impacted me significantly on a personal as well as professional front. And Akash, Vishal, they're all very prolific researchers. Bhavna, of course, so yeah, I'm thankful to everyone who has impacted my life and helped me grow as a researcher. Thank you. Yeah, if there is any question, I would be happy to answer. It's okay. If the students are hesitant in asking any question, I'm here for another 2 to 3 hours. Every student will be welcome. They can come and discuss if they have some curiosity regarding the drug discovery. Thanks for your illustrated talk. So it's indeed a pleasure for me to thank Dr. Kunal. I know Kunal for now almost 2 decades now. We met first in 2006 where Kunal was a MPharm student and I joined as a corporate marketing. But he has been a true friend. He has always been a great colleague. So I know Kunal that he has been a true researcher as well. Researcher at us. So I thank again Kunal for his discussion, his talk, and if there is no more question, then I think we can invite some speakers if they have speaker. Yeah, so maybe I can invite Kunal on stage for discussion. May I request Principal Sir as well? Now I request Principal Sir to felicitate Vinod Sir and Gaurav Sir. Thank you so much, sir. Now for the second technical session, I would like to request Professor Dr. Priyanka Kriplani to chair the session and Dr. Divya to co-chair the session. I request Dr. Priyanka Kriplani to introduce our second speaker of the day. Please give a huge round of applause. Good afternoon, everyone. First of all, I want to thank Dr. Ashwini for giving me the opportunity to introduce our next speaker of the day. So, our next speaker of the day is Dr. Deepak Kumar. He has done his Bachelor's of Pharmacy from the Govind Singh College of Pharmacy and Master's degree from Punjab Technical University. He has done his PhD from CSIR at IIM Jammu, and after PhD, he moved to USA for postdoc
research. And Dr. Kumar, his first postdoc was in University of Illinois, Chicago, and second postdoc was in Medical School, Boston. And after his postdoctoral research, Dr. Kumar, he has joined IIT BHU as assistant professor in pharmaceutical engineering and technology. He has achieved prestigious national postdoctoral fellowship, and he is also author and co-author of more than 60 research publications. His area of research include chemistry, fluorescence chemistry, and medicinal chemistry in the domain of tuberculosis and cancer. Also, he is currently running multi-crore government projects sponsored by DBT, ICMR, ANRF, and Ministry of Earth Sciences. So I request sir to please take over. Please, sir. Okay. Good afternoon to all of you. Thanks for the introduction, and thanks to Washini sir to conduct this conference. और इसी बहाने मैं अपने यहाँ पे सीनियर से मिल पाया, क्लासमेट से मिल पाया. Most of them are my seniors and classmates. So, regarding my brief introduction, I am associate professor in IIT BHU. और वहाँ पे मैं प्रोसेस केमिस्ट्री, फ्लोरेसेंस केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पे वर्क करता हूँ. तो आपकी नॉलेज के लिए प्रोसेस केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम जो ड्रग्स हैं मार्केट में जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनको चीप करते हैं, चीप कॉस्ट पे लेके आते हैं. जैसे उनकी मल्टी स्टेप सिंथेसिस होती है उसको हम फ्यू स्टेप सिंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं. फ्लोरेसेंस केमिस्ट्री में जैसे किसी को कोई डिसीज है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो लाइट देते हैं. तो जैसे ही वो किसी डिसीज एरिया पे जाते हैं दे स्टार्ट शाइनिंग, तो हमें उनकी लोकेशन का पता चलता है. एंड ऑफ कोर्स वी आर डूइंग मेडिसिनल केमिस्ट्री. इन मेडिसिनल केमिस्ट्री वी आर वर्किंग ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. सो ये है मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. बट मैंने सोचा कि आज की मेरी ऑडियंस है जो बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक होगी. And if I start explaining like मेरी लैब में क्या रिसर्च चल रही है तो शायद ना भी समझ आए, क्योंकि ऐसा मेरे पास साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं बी फार्मेसी को अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा था, then they start looking कि ये क्या हो रहा है. तो अपनी जो प्रेजेंटेशंस को मैं काफ़ी इजी रखूँगा. जो करंटली आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी आप यंत्र यूज़ करते हैं, बिकॉज द टुडे our conference topic is YANTRA. जो भी हम यंत्र यूज करते हैं टू डू रिसर्च और जो मैंने कभी बी फार्मेसी में देखे थे उनसे कितने अपग्रेड हुए हैं, उन सब के बारे में आज की इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं. सो ओके, सो अप टू बी फार्मेसी माय नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री सिर्फ यही तक थी. ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, कुछ मिक्स करो कुछ प्रोडक्ट बनेगा. आई थिंक आपकी भी इतनी ही होगी, राइट? एक माइक्रोस्कोप देखिए, बर्नर देखिए, उसमें कुछ रिएक्शन होता है. थोड़ी सी और एम्फॉर्म लेवल में इतनी इंक्रीज हुई कि कुछ कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, समथिंग कुछ ग्रेजुएट फास्ट हो गए. बट एम फार्मेसी में जब मैं गया तो वहाँ पे एक मैंने ये टूल सीखा जिसे कहते हैं YANTRA. सो कभी आपने सोचा है कि आपकी जो केमिस्ट्री की बुक्स होती हैं उसमें स्ट्रक्चर कहाँ से बनते हैं? तो वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं इस YANTRA टूल से. आप देख सकते हैं कि इस YANTRA टूल में बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आप ड्रा करते हैं. तो फाइनली यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड से कुछ अल्फा बीटा सैचुरेटेड कंपाउंड. तो ये होता है YANTRA सॉफ्टवेयर टूल. ये मैंने अपने एम फार्मेसी में सीखा था. तब 2008 2009 मॉडल था. नाउ 2024 चल रहा है. You will get more refined structure. You can do color coloring. You can fill colors in the array. So this is about YANTRA. और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं एक्चुअली आप YANTRA से. शायद आप बी फार्मेसी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट हैं क्रोमेटोग्राफी पढ़ते होंगे, आप एनएमआर स्पेक्ट्रस के बारे में पढ़ते होंगे.
तो वो सब भी आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि ओके एरोमेटिक रिंग्स की पीक कहाँ आती है, एल्डिहाइड रिंग की पीक कहाँ पे आती है। तो there are multiple things you can do or play with the camera tools. So ये केमिस्ट्री के टूल्स हैं। तो जब भी हमें इस एक लाइन में रिएक्शन लगानी होती है, तो या तो जैसे मैं अगर आपकी बी फार्मेसी की बात करूँ, आपके प्रैक्टिकल्स में क्या होता होगा, या तो आपके टीचर बताते होंगे रिएक्टेंट ए ले लो, रिएक्टेंट बी ले लो, उनको मिक्स करो, यू विल गेट सम प्रोडक्ट। बट समटाइम कुछ नई रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, और अदरवाइज वी वांट टू चेक कि इसमें ऑलरेडी किसी ने वर्क किया हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम एक और टूल यूज करते हैं, दैट इज लाइक शाई फाइंडर। तो पहले जब लोगों को लिटरेचर सर्वे करना होता था केमिस्ट्री के लिए, तो बहुत से जर्नल्स होते थे, उसमें जाकर सर्च करते थे, या एक लाइब्रेरी होती थी जहाँ काफी जर्नल रखे होते थे। तो जब मैं पूछता था अपने सीनियर से, तो वो कहते थे कि लिटरेचर सर्वे में कई महीने लग जाते हैं, 6 मंथ लग जाते हैं। यहाँ पर इस शाई फाइंडर टूल्स में हम क्या करते हैं, जैसे ये मुझे रिएक्शन लगानी है, तो कैमरा टूल से आपको स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं। सेम फैसिलिटीज आपको यहाँ पे भी मिलती है, आप साइड में देख सकते हैं कि डिफरेंट रिंग्स, बॉन्डिंग मैकेनिज्म दिए हुए हैं। आप जस्ट स्ट्रक्चर बनाइए, ओके कीजिए, ओके, एंड देन ये आपको बता देगा लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर मतलब कंप्लीट लिटरेचर एक ही जगह पर आपको ये दे देगा कि कितना काम हो चुका है, और आपको ये भी बता देगा कि किस जर्नल में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा, आपको मेथड मिल जाएगा। तो बट दिस शाई फाइंडर टूल इंडिया में कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास ही होता है, एंड थैंकफुल ये मेरी यूनिवर्सिटी में है, मुझे अवेलेबल है। तो इससे हमारी रिसर्च बहुत फास्ट होती है। तो यस, जो आपके स्टूडेंट्स लाइक बी फॉर्म प्लेटफॉर्म जाएंगे, कैमरा टूल्स के बारे में उन्हें पता चलेगा, एंड फ्यूचर में शाई फाइंडर टूल्स के बारे में भी पता चलेगा। नॉट जस्ट केमिस्ट्री, अगर कोई फार्माकोलॉजी में मूव कर रहा है, फार्मास्यूटिक्स में मूव कर रहा है, they can also search on this शाई फाइंडर टूल्स। सो अब हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन किसी ने नहीं की, और मान लीजिए हमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप बनाना है जिसका रिपोर्टेड मेथड है, देन वी स्टार्ट वर्किंग। अब मैं मूव करता हूँ कि हमारी लैब में रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है। नाउ यू हैव रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स को आपको राउंड बॉटम क्लास में डालना है, तो आई थिंक बी फार्मेसी स्टूडेंट ये बता सकते हैं क्या है, एंड यस बता सकते हैं पिपेट। सो व्हेन आई वाज इन बी फार्मेसी, जनरली रबड़ यूज करते हैं, ये रबड़ बल्ब, लेकिन कुछ सम ऑफ माय क्लासमेट नॉट, और कई बार मैं भी माउस से सर्च करता था, और मैं देखता था कुछ वो हाइड्रोक्लोरिक भी सर्च कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी सर्च कर रहे हैं, तो करते थे। बट लेटर ऑन व्हेन आई वाज इन यूएसए, मैंने देखा ये यूज कर रहे हैं। दिस इज लाइक ए इलेक्ट्रिक पंप, देयर आर 2 बटन, जस्ट यू हैव टू, if you press upper one, then your solvent will move upside, and if you press down button, then it will go down. मैंने अपनी लैब में भी लिया अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड विद इन 1 मंथ उन्होंने शायद होली के लिए खराब कर दिया। तो एक और फिर मैंने ये लिया, तो इसमें जस्ट देयर इज अ व्हील, इफ यू रोटेट दिस व्हील योर सॉल्वेंट विल गो आउट, और इफ यू रोटेट डाउन इट विल गो अप। लेकिन इफ यू आर डूइंग रिसर्च, रिसर्च में बहुत ही रेयर यूज होता है रेयर पिपेट। देयर इज ए माइक्रो पिपेट्स, थ्रू दिस माइक्रो पिपेट्स वी कैन यूज लाइक फ्रॉम 1 माइक्रोलीटर टू लाइक 100 200 1000 माइक्रोलीटर तक हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो एमफॉर्म तक, पीएचडी तक तो मुझे अपर वाले केस का पता था, ओके माइक्रो पिपेट सॉल्वेंट लिया, रिएक्शन में डाला। Then I was in university, मैंने ये देखा that is a multi-channel micropipettes, और ये mostly biologists use करते हैं and they are working on a 96 well tubes, okay? So one time में ही 96 उनके लिए quality से ज़्यादा fast हो जाता है। So ये एक तरह की यंत्र ही है जो big time market में आए, लोगों ने use किया, उनका research easy और fast है। इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे बी फार्मेसी में बहुत डर लगता है।
कोई गैस कर सकता है? एनालिटिकल वेइंग मशीन। आई नो कि उस समय कुछ हमें चिप्स दी जाती थी 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, यू हैव टू weigh, you have to calibrate and it consumes lot of time. मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था, कई बार मेरे पास चिप्स हो जाती थी या होती नहीं। तो आजकल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस, जो आपकी 0.01 मिलीग्राम से 1 ग्राम स्केल तक आपके लिए वेट करके देते हैं। And yes, you can see it is totally packed. The reason is when you are weighing up to 1 milligram, airs की disturbance बहुत होती है weight में. In that case, that's why this is totally covered in a chamber. And of course, gram scale to kilogram scale you can weigh easily on this kind of electronic device. एक होता था pH meter, pH paper यूज करते होंगे आप। तो जब भी पीएच पेपर या एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो मैं मोस्टली अपने फ्रेंड से पूछता यार ये पिंक हुआ या रेड हुआ या और एसिड डालना पड़ेगा। तो आजकल डिजिटल पीएच मीटर्स आ गए, यू हैव जस्ट टू डिप इन योर सॉल्यूशन एंड दे विल गिव यू एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ योर पीएच। Which one is this tool या machines या instrument क्या है ये आप बता सकते हैं? वाटर बाथ। तो पहले हम मोस्टली अप टू एन फॉर्म वाटर बाथ के ऊपर रिएक्शंस कराते थे, लाइक 100 डिग्री तक हम कंट्रोल करते थे, राइट, एंड देयर इज ए रेगुलेटर। अब क्या होता था, किसी और दूसरे फ्रेंड को रिएक्शन लगानी होती थी 80 डिग्री पे, तो कॉन्फ्लिक्ट आता था। कई बार होता है स्टूडेंट अपना पानी ऐड कर देता था, मैंने तो 100 डिग्री तक मेंटेन किया हुआ है, आके बीच में पानी ऐड किया तो टेंपरेचर डाउन। Controlling water temperature was very difficult, and yes, इसमें conflict होती है labs में। और ये सेटअप होता था reactions का, आप just एक डिस्क हटा देते थे, display, then you put your reaction। इसके drawbacks बताऊंगा। फर्स्ट तो ये है कि it is very difficult to control the temperature। Then this one is what is this? कुछ guess कर सकते हैं पीछे कौन सा instrument है? Heating metals, okay. So this one is good. You can maintain your temperature, and but इसका भी एक drawback है, वो cover करेंगे। And this one is also a hot plate. इसके ऊपर sand bath रखते थे, sand bath का temperature काफी देर तक maintain रखा जाता है। So currently अगर आप research lab में जाएंगे, किसी भी research lab में जाएंगे, जैसे कुमार सर ने अभी अपनी research lab दिखाई दे रही है hot magnetic stirrer plates, mostly यही यूज होता है रिसर्च में। And there is a oil bath, इस oil का टेम्परेचर 350 डिग्री या 500 डिग्री तक चला जाता है। And back side you can see there is a hello, hello, okay, so अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है देन यू मस्ट हैव ए थर्मामीटर। आप क्या करेंगे, इस में थर्मामीटर डालेंगे एंड देन यू विल रेगुलेट। बट आजकल क्या है, एक प्रोब आ गया, दिस वन इज ए प्रोब। इफ यू जस्ट पुट दिस प्रोब इन योर ऑयल बाथ, आप जितना मर्जी रेगुलेटर कर सकते हो, 400 डिग्री तक कर दो। बट अगर आपने प्रोब में 100 डिग्री सेट किया हुआ है देन ऑयल बाथ का टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। बाय चांस एक दिन मेरे स्टूडेंट ने प्रोब का टेम्परेचर 100 डिग्री तो सेट कर दिया, रेगुलेटर पूरा बना दिया, लेकिन उसने ऑयल भी डिप नहीं किया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी लैब बहुत हुआ ऑयल पूरा हो चुका था। तो यार यू हैव टू केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। सो आपको दिस विल प्रोवाइड यू हीटिंग एंड सेम टाइम you can put your magnetic waves inside your flask, so study भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर की लाइन पे you can control your temperature, you can fast your reaction by putting magnetic waves। Okay, so I think pharmacognosy lab में आपने ये चीज यूज की होगी, कुछ guess anything क्या हो सकता है ये? Any guess? Okay, तो आपने पढ़ा था 3 लेयर क्रोमैटोग्राफी,
तो पहले हम बनाते थे ग्लास प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, ये सिलिका का बेड बनाते थे ग्लास प्लेट्स के ऊपर। कई बार हाफ ड्राई होता था, मीनवाइल यूज कर जाते थे तो ये ब्रेक हो जाती थी। कई बार हमें लगता था बहुत अच्छी बना दी हमने, तो जैसे सॉल्वेंट में डालते थे वो सिलिका नीचे धीरे धीरे धीरे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी इसको बनाने में। और जो कोई अच्छा बेड बना रहा था उसकी तारीफ करते, वाह यार आपने बना दिया ये। तो बट करंटली हम रिसर्च में यूज करते हैं प्री कोटेड सिलिका प्लेट्स आती हैं ये, और एल्युमिनियम फॉइल्स के ऊपर बनी होती है। आप जस्ट अपने स्पोर्ट्स लगाओ एंड यू कैन डू योर क्रोमेटोग्राफी वेरी इजीली। या फॉर वन प्लेट इट्स नियर अबाउट कॉस्ट इज 3000 to 4000 rupees and 24 प्लेट्स होती हैं इसमें। सो एक रिएक्शन को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बी फॉर्म में क्या होता था कि हमें टीचर बताते थे ए को बी से मिलाओ, हीट करो, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट है, राइट। बट धीरे धीरे पता चलता वो तो स्टार्टिंग मटेरियल ही था, प्रोडक्ट तो बना नहीं, स्टार्टिंग मटेरियल ही प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो आपका प्रोडक्ट बना है, इसको कैसे प्रूव करते थे, तो 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी से। फॉर एग्जांपल मुझे इससे ये बनाना है, दिस इज ए डीएसिटाइजेशन प्रोसेस, यू आर मेकिंग फ्रॉम एसिटाइलेटेड टू फ्री हाइड्रोक्सिल। तो हम 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में विद कैपिलरी एक्सपोर्ट लगाते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग मटेरियल का स्पोर्ट। जैसे ही रिएक्शन मूव करती है फर्दर तो हम अपने प्रोडक्ट का स्पोर्ट लगाते हैं। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरी वाइड स्पोर्ट, मतलब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। And with time you can see all your product is converted into, all your reactant is converted into product. So in layer chromatography का ये maximum use किया जाता है रिसर्च में to monitor your reaction कि आपका प्रोडक्ट बना है या नहीं। लेकिन इन लेयर chromatography के और भी होते हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, इसमें हम करते हैं प्रिपरेटिव टीएलसी, शायद आप पढ़ेंगे फ्यूचर में। प्रिपरेटिव टीएलसी में आप अपने मल्टीपल स्पोर्ट्स लगाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट आइसोलेट करना है रेड वाइन, तो मैं इसको स्पैचुला से जस्ट स्क्रैच करूंगा, अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालूंगा और मुझे अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो फाइनली आप रिएक्शन लगा चुके हैं, आपने ट्रू टीएलसी ये भी कंफर्म कर लिया है कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मैंने आपको एक मेथड बताया कि प्रिपरेटिव टीएलसी से करते हैं, और एक मेथड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बिफोर दैट क्या आपने ये ग्लासवेयर देखा है, व्हाट इज दिस वन? किसी को कुछ पता है कि क्या ग्लासवेयर है? दिस इज ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल सेपरेट करता है पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट से ऐड करने में। Okay, so generally हम इथाइल एसीटेट वाटर या डाइक्लोरोमीथेन वाटर यूज करते हैं। So रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन में मोस्टली कई लोग वाटर डालते हैं और कई डाइक्लोरोमीथेन डालते हैं, और फाइनली सेपरेटिंग फनल में हम उसे शेक करते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट हमारा ऊपर आ जाता है, यू आर यूजिंग इथाइल एसीटेट, और वाटर पार्ट नीचे आता है। जनरली आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके कंपाउंड आ जाते हैं जो आप आइसोलेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ योर कंपाउंड। तो इसको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेते हैं। आई विल ओपन दिस एंड वाटर पार्ट आ जाएगा एंड ऑर्गेनिक पार्ट में डिफरेंट ग्लास में कलेक्ट कर। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता था कि ओके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो आपका बहुत यूज हो चुका है, अब आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ड्राई करना है बिफोर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अगेन हमें वाटर बाथ की तरफ मूव करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसकी बजाय हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज ए रोटावेटर। तो आपका कंपाउंड ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और आप उसको सिलिका जेल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, एक फैक्ट्री प्लेट में अपना सिलिका जेल ले लिया, उस पे अपना कंपाउंड ले लिया, तो 1-2 घंटे तक बैठे रहते थे या सूखेगा सूखेगा।
तो मतलब काफी टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन आजकल हम यूज करते हैं इसके लिए रोटावेटर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। तो आपके पास आपका कंपाउंड आ चुका है, आपने उसको सिलिका के ऊपर एडजॉर्ब करवा दिया। देन वी कम टू कोलम क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट साइजेस के कोलम आते हैं, लाइक आपको कितने स्केल पर प्योरिफिकेशन करना है, 100 मिलीग्राम स्केल, 1 ग्राम स्केल, कितने स्केल्स पे आपको प्योरिफिकेशन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर हम अपना स्टेशनरी पैक करते हैं एंड ऊपर अपना सैंपल डालते हैं। Then we move organic solvent in this gradient based like ethyl acetate, hexane का mixture या डाइक्लोरोमीथेन मिथेनॉल का मिक्सचर यूज करते हैं। और आपका अगर कलर्ड कंपाउंड है, you can see a band and that band you ultimately collect in some tubes or your conical flask। पिक्चर में अच्छा दिख रहा है लेकिन केमिस्ट्री लैब ऐसी होती है, ठीक है। एक फ्यूम हुड में आपका सब कुछ ग्लास वेल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये कॉलम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कॉलम में आपका कंपाउंड आ रहा है तो आप अपना ट्यूब्स में कलेक्शन करते हैं। तो आपने अपना कंपाउंड प्योर कर लिया थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बट नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, बिफोर डिटेक्शन यू हैव टू ड्राई योर कंपाउंड। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारा कंपाउंड आया है नहीं है, अगेन हम टीएलसी के थ्रू चेक करते हैं और उस टीएलसी को हम ब्यूटी चैम्बर में देखते हैं कि हमारा कंपाउंड आया है या नहीं थ्रू कॉलम। सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग मटेरियल आ रहा है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट के बाद प्योर। सो आपको जो थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्योर कंपाउंड मिलता है, अल्टीमेटली आप उसको ट्राई करें। So next is if you want to do column chromatography, it will generally take 3 to 4 hours. इसका एक रिप्लेसमेंट है, that is flash chromatography. Flash chromatography में आप अपना स्टेशनरी फेस ऑलरेडी प्री-मेड कॉलम आते हैं उसमें पैक करते हैं। देन आपको ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली या आपको कंपाउंड प्योरीफाई करके दे देता है। इसके पास एक यूवी डिटेक्टर लगा होता है, यूवी डिटेक्टर में उसको जैसे ही लगता है ओके यूवी सिग्नल आ रहा है, कंपाउंड आ रहा है, तो वो यहाँ पे इसमें इन ट्यूब में आपको कलेक्शन करके आपके कंपाउंड के लिए। नाउ यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक 3 hours 4 hours, just 20-30 minutes पे it will purify your compound. Okay, so now your compound is in organic solvent after column chromatography और after flash chromatography. So previously हम अपने कंपाउंड को ड्राई कैसे करते थे, सॉल्वेंट को कंडेंस कर देते थे और हमारा कंपाउंड पीछे रह जाता था। But now we dry our compound through flash rotary evaporator. Rotary evaporator को इस kind of backbone of chemistry कहा जाता है, organic chemistry. So you can see there is a chiller. Chiller का काम होता है condense करना. Okay. There is a vacuum pump. Of course, we create a vacuum. There is a, you can see what say water bath or heating metal. Okay. This is kind of a water bath. So ये round bottom flask है. Round bottom flask में हम अपना organic solvent डाल दें जिसमें product है हमारे पास। अब ये राउंड बॉटम फ्लास्क इस वाटर बाथ में जिसका टेम्परेचर नॉर्मली 50 डिग्री अराउंड सेट करते हैं, इट स्टार्ट रोटेटिंग एंड द सॉल्वेंट स्टार्ट मेकिंग ए थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ दिस फ्लास्क एंड ऑफ कोर्स देयर इज a vacuum. This vacuum will create air vacuum and because of that your solvent start evaporating and there is a condenser which is attached from this chiller and it start condensing your solvent. So solvent आपका इस मास्क में collect होना start होता है and product will get at the back. So this rotovapor is in my lab, okay, and आपको याद है कि product ultimately dry powder form में collect हो चुका है।
After collection, what we do? We will go to various analytical instruments. Uh, in our institute, we have like 500 megahertz and 600 megahertz NMR. NMR, I think आप 40 पे पढ़ेंगे. There is a NMR of 800 megahertz or 1.2 megahertz. It is in my postdoc lab. So आपको एक NMR ट्यूब में अपना solvent और compound डालना होता है. Then this solvent, this NMR tube will go in this flow, and this flow will go into the instrument. So after giving NMR, you will get this kind of spectra. इस spectra को हम solve करते हैं through our knowledge. या आप कई बार YANTRA की help लेते हैं, क्योंकि आपको starting में दिखाया था molecules का जो structure, उसका proton and C13 NMR कुछ ना कुछ YANTRA predict कर देता है. So ये almost this is very easy to solve. You will study in your like 4th year chromatography technique. So किसी compound का molecular formula निकालना हो या molecular weight निकालना हो, उसके लिए हम use करते हैं LC-MS या LC-HRMS और GC-MS gas chromatography mass spectrometry. So this instrument gives you exact mass of compound and as well as molecular formula. और कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा होता है. So ये आपको आपके कंपाउंड का exact molecular weight बता देगा और same time आपके लिए molecular formula भी predict कर देगा. Then of course infrared spectroscopy आपको बताती है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आपके कंपाउंड में. और इसका इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा. और ये ऐसे स्पेक्ट्रा होता है जो आई थिंक आप भी फार्मेसी में पढ़ोगे कि कार्बोनिल स्ट्रेच कहाँ पे आते हैं, 1700 OH की पीक कहाँ आती है, अबाउट 5400 के आसपास. कई बार हमसे स्पेक्ट्रा सॉल्व नहीं होता, कुछ न्यू कंपाउंड होता है या नेचुरल कंपाउंड होता है, हमें नहीं पता चलता कि वो क्या कंपाउंड है. इन दैट केस वी ट्राई टू मेक क्रिस्टल ऑफ इट. और उस क्रिस्टल को हम इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देते हैं. तो ये हमको उसका 3D स्ट्रक्चर दे देता है, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर. तो आप डायरेक्टली आपको पता चल जाता है ओके देयर इज ए some 6-member ring, it could be benzene ring, and there is a red color, there is a carbonyl group, oxygen group. So just you have to make crystal of your compound, submit your crystal into X-ray crystallography, and that will give you the final structure. आजकल कंप्यूटर मेडिसिन केमिस्ट कंप्यूटेशनल टूल्स का बहुत यूज करते हैं. एआई भी अटैच हो चुका है कंप्यूटेशनल टूल से. मोस्टली इसमें मॉलिक्यूल की स्क्रीनिंग 1 लाख 2 लाख बहुत इजी वे में बहुत कम टाइम में आप स्क्रीन कर सकते हैं. और आप इंटरेक्शन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड कर रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रोटीन में. बट जब आई वाज इन पीएचडी, मुझे एक मॉलिक्यूलर सिमुलेशन के लिए 3 मंथ्स लगते थे. कई बार लाइट चली जाती थी, कई बार पर्सन का लैपटॉप भी इतना लाइक मॉडिफाइड वर्जन नहीं होता था तो खराब होने के चांसेस होते. आज के दिन में ये 90 डेज वर्क जस्ट 1 डे में होता है. एंड IIT हैज लाइक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम. तो लाइक 100 days का वर्क विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स में करके देता है. मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन, स्क्रीनिंग, इट्स वेरी इजी प्रोसेस फॉर them. So this is all about the tools we generally use in chemistry lab. Now I will tell you the techniques. ये टेक्निक्स हो गई कि आपने RBF में रिएक्शन लगा दी, हीट कर दी. एक और टेक्निक होती है माइक्रोवेव सिंथेसिस. कुछ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है नियर अबाउट 200 डिग्री 300 डिग्री. तो मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. So in that case we generally use microwave. आपके घर में जो माइक्रोवेव है, you can also use that microwave for your reaction. Microwave within 1 minute or few seconds it can take temperature very high और आपकी reaction को बहुत like within 1 or 2 minutes में convert कर देता है. So this technique is microwave synthesis technique.
माइक्रोवेव इरेडिएशन का यूज करते हैं। Another technique is photochemistry. Now this is very high chemistry, inorganic chemistry, photochemistry. इस पे मैं वर्क करता हूँ। इसमें हम जैसे दिवाली के टाइम में आप ब्लू एलईडी, ग्रीन एलईडी लाइट यूज करते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। That specific wavelength we use to excite our molecule to react with another molecule, and we will ultimately get our product. ये सेटअप दिखने में बहुत डिफिकल्ट है। मेरी लाइफ में जस्ट हमने वो दिवाली वाली लाइट्स ली हुई है, एक बॉक्स में फिट की हुई है, हमें पता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और उसके अंदर हम अपना मैग्नेटिक स्टर्डर रख देते हैं। That blue light, green light, they excite the molecule and ultimately we get the product. Another one is electrochemistry. या इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है and that electron strikes another reactant molecule to react with another reactant and ultimately we get products. And this one is a flow chemistry. Very few labs all over the globe is working on flow chemistry. Generally हमने रिएक्शन की एक बैच में RPF में सॉल्वेंट डाला एंड देन रिएक्टेंट डाले और प्रोडक्ट निकाला। फ्लो केमिस्ट्री में हम अपना रॉ मटेरियल एक जगह डालते हैं, then there is a pumping system. It will take into the some part where there is a heating coil. You can maintain temperature, pressure, और ultimately आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू वर्क करती रहती है। That's why it is called flow chemistry. तो ये टेक्निक भी यूज होती है। So I think this much is sufficient to understand जो आपको अगर आप एमकॉम में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, टेक्निक यूज होती है फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस। So finally, I summarize here everything. So I would like to thank Patron SEA SK Jindal and Miss Indu Jindal, convener Ashmi sir, हमारे सीनियर रहे हैं, और थैंक यू उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इससे मैं आपसे मिला, अपने सीनियर से मिला, अपने बैच से मिला। एंड डॉक्टर लक्ष्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेहा यादव, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर स्मिता सर नरवाल, और वेरियस स्पॉन्सर्ड सपोर्टिंग एजेंसीज एंड वेरियस सपोर्ट। सो थैंक यू। नाउ अगर आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैं किस तरह का लैब में वर्क करता हूँ या कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं या क्या क्या ग्रेडेशन हुई है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। I'm grateful to our distinguished speaker, Dr. Deepak, for his thoughtful, provoking presentation. His expertise has really enriched this session. So I'm thankful once again. And let's continue to share our knowledge and initiate innovation in the pharmacy. Thank you. So now it's a time to show our appreciation to our speaker, Dr. Deepak Sharma. And for that, I request Principal Sir, Dr. Priyanka Kripalani, Dr. Divya Kiran to kindly present a token of gratitude from our college. Please give a huge round of applause. Again, I request Principal Sir to kindly present a token of gratitude to Dr. Priyanka Kripalani and Dr. Divya Kiran. Please give a huge round of applause. I again request Principal Sir
to present a token of appreciation, and I would like to call Dr. Neha Yadav and Dr. Smita Narwal to come up on the stage and felicitate with a token of appreciation to Principal Sir, Dr. Gaurav Agarwal. From 5. I request Dr. Praveen Goyal, HOD, to come up on the stage and become the part of appreciation, please, sir. Now I request Dr. Venu Chaudhary to come up on the stage. Please give a huge round of applause. Now I request Dr. Saurabh Mann to come up on the stage. Please give a huge round of applause. Now I request Dr. Gagandeep Kaur to come up on the stage and become the part of appreciation. Please give a huge round of applause. Now I request Dr. Preeti from Shri Ram College of Pharmacy to come up on the stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Arun Mittal to come up on the stage. Dr. Antil from Southport College of Pharmacy, Sonipat. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So now it's the time for a lunch break. Please enjoy the meal and we will meet after 1 hour for panel discussion. Thank you. Half an hour, half an hour. And there will be a cultural program after the lunch break.